हेलो फैमिली, आई एम होपिंग आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं. एवरीथिंग इज गोइंग अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स मेक श्योर इट स्टेज दैट वे. नाउ टुडे मैं आपको जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मीम दिखाने वाला हूँ. मीम इज सो गुड टू स्टार्ट ऑफ विद, राइट? इसको क्या नाम है? सब लोग यूज करते हैं इसको. इट्स कॉल्ड हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट्स गोइंग. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेट पे, बट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट दिस मीम, here's something that I have made up for you. This is how it started. यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कायोसेरा VP210, सैमसंग का SCH V200 और शार्प का JSH04. तीनों मैंने यहाँ पे डाल दिए because all three claim to be the first camera on a mobile phone available commercially. But this is how it's going. Vivo X70 Pro, X70 Pro Plus, ये जो है phones they define where camera phone technology वहाँ से आई है आज तक. Both these phones have a world first in them and you will understand as soon as you see them कि क्या क्या है different. Let's first start with the story of what I now have in my hand. आप लोग सब सोच रहे होंगे यार ये क्या कंट्रैप्शन है, ये क्या अजीब सी चीज है. नहीं, ये रेप्लिका नहीं है ऑफ द लूव्र म्यूजियम इन पेरिस. इट्स ऑल्सो नॉट अ सी थ्रू वर्जन ऑफ एन इजिप्शियन पिरामिड. ये जो है ना इज गोइंग टू प्ले टू रोल्स टुडे आउट हियर. एक तो इट्स अ वेरी ड्रामेटिक वे ऑफ शोकेसिंग द न्यू Vivo X70 Pro Plus. ये खुल जाएगा एक एक करके. एंड इट्स इवन मोर ड्रामेटिक वे ऑफ शोइंग वन ऑफ द बिग फीचर्स ऑफ द Pro Plus. हम लोग ने फोन इसके अंदर डाल दिया. जब हम लोग ने इसका एपेक्स उतारा उसमें हम लोग ने भरा पानी एंड देन वी टक्ड एट दिस चेन पुली काइंड ऑफ अ थिंग. और बहुत ही इंटरेस्टिंगली ना वाटर स्टार्ट्स ड्रिपिंग ऑन टू द फोन प्लेस्ड बिलो. जो फोन है वो रिकग्नाइज कर देता है दैट वाटर इज ड्रिपिंग एंड इट स्टार्ट्स प्लेइंग this sound. I mean, it's probably, मेरे हिसाब से, the most savage, most dramatic way that any brochure has ever said, hello, I am IP68 certified. I am water tough and dust tough in every which way. Cool Vivo. I wish बाकी ब्रांड भी कुछ ऐसा ड्रामेटिक करें. I think it makes things very interesting. But अब बात करते हैं about the actual two boxes because है तो unboxing, right? क्योंकि ये जो watery pyramid है ये तो आप लोग को नहीं मिलेगा. This is not the commercial way that they are going to sell the phone. कस्टमर बॉक्स के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे भी वीवो ने ना काफ़ी ड्रामा किया है बिकॉज द बॉक्सेस आर ड्रामेटिकली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फोन्स. वो जो हम लोग टिपिकल स्मॉल थिक रेक्टेंगल में हमारे को बॉक्स मिलता है दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्लैगशिप्स, दैट इज़ नॉट हाउ दिस इज. ये Vivo X70 Pro का बॉक्स है. इसमें इन्होंने ZS की जो ब्रांडिंग है बाहर ही दी है. स्टार्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड. बॉक्स बहुत एलिगेंटली डन है, स्क्वायर है, फ्लैट है. अब फ्लैट जो है बड़ा डेंजरस वर्ड होता है बिकॉज इट यूजली मीन्स फ्लैट है तो अंदर चार्जर नहीं है. बट इसमें there is a charger, even actually much more, many more goodies, way more. आजकल फ्लैगशिप बॉक्सेस में कुछ नहीं मिलता है. वीवो ने बहुत कुछ डाल दिया तो इसको हम लोग खोलते हैं. तो हम लोग ने उसको खोला. पहली चीज जो आप देखेंगे वेरी नाइसली जो फोन इन्होंने डाला है, वेरी शिमरी एंड वेरी प्रीमियम. ऑब्वियसली योर आईज विल स्टिल फर्स्ट गो टू द कैमरा सेटअप बिकॉज कैमरा लुक्स वेरी डिफरेंट. अभी जो टेम्पटेशन है मेरी उसको आई एम गोइंग टू पुट इट असाइड एंड नॉट टॉक अबाउट द कैमरा. एंड बूम, not only can I see a charger in here, इन्होंने डाला है pair of really high-end wired headphones also. बहुत टाइम हो गया I have not seen this in a box and these look really nice. आपको एक clear case भी मिलता है for protection. I guess it's clear कि जो X70 Pro है has a very shiny back gloss finish. ये जो gloss finish है is achieved through precipitated crystals on fluorite glass. और plus side of this process is कि है बहुत shiny लेकिन it doesn't catch fingerprint smudges very easily. But now let's move on to the other big guy. This is the big boy. Phone जो है has so many things going right on this. This is the Pro Plus. It's absolutely bonkers कितना कुछ उन्होंने डाल दिया. Phone claims to have dual main cameras. फिर से मैं बताता हूँ, not dual cameras, dual main cameras. Big difference. Overall it has actually 4 cameras and all 4 are actual cameras, real cameras. वो macro type BS नहीं. तो इसमें है 2 main cameras. एक है 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड गिम्बल कैमरा, दूसरा 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा सेंसिंग GN1 सेंसर. इसीलिए when you actually open this box ना there's a cutout. वो सब कुछ और blank कर देता है and it only puts the camera body up front in focus. Looks very dramatic. ये phone जो है it makes sure that you know that you
have the Pro Plus. Again, बहुत ही ड्रामा है, very dramatic, but also very very professional. आपको एक feeling मिलती है that you've actually bought a serious machine. It's with you right now. इसमें भी है, there's a nice charging adapter, a pair of wired earphones again out here, और इसमें है एक proper प्रीमियम केस, वेरी वेरी नाइस टेक्सचर, वेरी नाइस लुकिंग. अब जो दोनों फोन्स हैं दे आर फ्लैगशिप, बट जो X70 Pro है इज अ फ्लैगशिप, एंड आई हैव टू से बेस्ड ऑन एवरीथिंग आई हैव सीन राइट नाउ, X70 Pro Plus जो है इज फ्लैगशिप प्लस प्लस प्लस. प्रीमियम मटेरियल है, सीरियस स्पेक्स हैं, ब्यूटिफुली बिल्ट है, बट इट्स द कैमरा सेटअप दैट इज द मेन डिफरेंशिएटर. परफॉर्मेंस वाइज आप जो है यू वोंट बी एबल टू मेक अप टू मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोन्स. एक में है इट्स रनिंग द Dimensity 1200, awesome chipset. दूसरा is running the Snapdragon 888 Plus, again awesome chipset. दोनों हैं 5G. Even all the other specs and features are very over the top. ये जो दो हैं they are setting new standards in what a flagship and a super flagship can be like. I'm going to quickly take you through जो बाकी specs हैं, जो बाकी features हैं, आइए देखते हैं, but this is a very quick look at them. अब let's move on to the camera department, the part that really stands out. दोनों जो है co-engineered हैं by ZS, दोनों के T-Star coating है on the lens by ZS. इसका मतलब है you won't see ghosting and lighting artifacts. Even जो आप कैमरा को even if you point it directly at a light, जो है ghosting और artifacts आपको नहीं मिलेंगे. X70 Pro जो है is the world's first smartphone to have a large sensor and a gimbal together in the main rear camera. ये अभी किसी और फोन में नहीं है. और X70 Pro Plus is the world's first smartphone to have stabilization technology चारों rear camera में है. Look, there are so many camera features that it will need a dedicated video for me to actually show you what all these can do, and I hope it comes out really well. But that's what I'm going to actually do. एक dedicated feature video करूँगा इसमें with proper hardcore camera torture test, the kind no one else can do, the kind that you guys have really started liking, that I've started doing. मैं इनको compare करूँगा also to the best camera phones in the world. देखते हैं क्या results आते हैं. But right now I'm going to leave you with some very quick samples from both these camera phones. याद रखें, I've tried to keep the lighting conditions very challenging. आसान नहीं बनाया मैंने, even though we've done it very quickly. और ये जो videos जो हम लोग ने लिए, they've been taken while we are walking, moving. So please notice करिए gimbal at work. Notice stability जो है even though we are moving and shooting. Because these, like I said, are the two world firsts in each phone. जैसे मैंने आपको बताया, X Pro world's first smartphone to have large sensor and gimbal together in the main, और X70 Pro Plus में है चारों कैमराज में वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्टफोन टू हैव स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑन ऑल 4 रियर कैमराज. जितने सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, वी आर रनिंग इट वेरी क्विकली, सारे के सारे सैंपल्स लेबल्ड हैं एज टू विच फोन इट्स फ्रॉम. अच्छा, टॉर्चर टेस्ट तो करेंगे, डीप रिव्यू करेंगे, बट व्हाट्स माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑन अनबॉक्सिंग दीज टू? Quite impressive, very well built, excellent design, premium material, over the top specs हैं इसके. but ये जो कैमरा डिपार्टमेंट में इन्होंने जो पुश किया है एनवेलप को really high. I can't wait to put these two into the torture test level. Also compare the camera with the best camera phones in the world. I think that will be such an exciting video. That will be a video that's coming up very soon. So आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए, press the notification button. You will know as soon as that video is out. See you on that one.